This is honestly an attempt to impress my future MIL. I'm going to eat this one piece. Hi guys, so for this video I'm going to be making aesthetic breakfast recipes that are inspired by Pinterest. We'll try to keep it as aesthetic as possible. That's why I'm wearing a very pretty maxi dress. You'll see me in it later. Or if you've seen my Zudio haul, that is the one I'm wearing. We're going to make cheese omelette and toast. We're also making french fries because I just love them. And we're also making a fruit platter because aaj mama ka fast hai. She's fasting. Aaj ekadashi hai. Let's go and wash all the fruits and start cutting them. Okay, so let's get chopping. I have my chopping board, I have a knife, I have some plates to keep the fruits in, I have half a melon, and we've got this bowl to keep the anar, pomegranates. Yeah, so we've got everything here. Okay, let's start cutting the watermelon first. Nobody told me it's going to be this hard. Dude, I can't. I am so bad at this. The first cut is already teda. Okay, so what I'm going to do is cut this into half and then cut this into half. So I'm going to pick these, keep it like this here. So we'll take the thicker piece and we'll cut it into 2 slices to make it thinner. Yeah. How do I cut this? I have to peel it off as well. How do I cut this? Okay, I'll cut it in half first. Yeah. Let's take all of this out. I need to take these seeds, put it in the waste. These are so slimy. That's what she said. Okay, peeling kiwi. Peeling kiwi is easy. Okay, this unaesthetic looking kiwi, I'm going to eat this one piece. It's a little sour. I asked mama how to do it, so we're going to do how she taught me. You have to cut one slice here, and then you have to cut one at the bottom. This is hard. And then you have to sort of slit it from the middle a little. Yeah. Now you have to try to. Oh yeah, it's easy. You have to open it. I think for mangoes we're going to do the turtle wala cheese. I don't know, I called it turtle wala bachpan mein, but I'm trying to make all the lines parallel. Now you push it. Oh yeah. This is honestly an attempt to impress my future MIL, and I don't know if she's not impressed by my chopping and cutting fruit skill. I don't know what she will be impressed by. We'll just... Okay, why is it not coming out? Is this too much? Mama, 1 minute idhar aa jao. We're going to keep this aside now. Watching Abhiba make an omelette is going to be a treat. And let's begin by cracking the eggs. Okay, now we whisk it. We're going to put some chili and some salt in this. I've already washed my hands. I'm not touching the masalas like that. And let's do it. I think that's going to be a little too much salt. I think our omelette is going to have a big hole in it. Now you know the things I cannot do. Just got it.
Oh yeah, I was successful. Flipped it. Okay guys, so now it's time to fry the fries and I'm going to take Mama's help and she's here now. Mom, say hi. Idhar. Hi. Yeah, so she will help me do the fries. बाकी सब मैंने खुद किया है, ठीक है? We are quickly going to cut all the mosmees because Abhiba forgot to take out juice. And that was the major plan of this video. We have some juice too. टेस्ट दिख पे अच्छा पहले प्रेजेंटेशन के मार्क्स दो। ये देखो प्रेजेंटेशन तुमने सच में अच्छी करी है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे पे। अब इसका हम वीडियो का नाम चेंज करते हैं मुकबैंगिंग विद अभिजात। देवियों सज्जनों आपका स्वागत है। मैं नाश्ता करने आया हूँ जहाँ पे मुझे सुबह नाश्ता करना, दोपहर हो चुकी है। ईद के पावन अवसर पे हमको ये खिलाया जा रहा है। ये मम्मा का फास्ट है वो उनके लिए बना है, तुम्हारे लिए चीज ऑमलेट बना है। ओह नाइस। ओ मैंने ध्यान नहीं दिया था इसमें चीज पड़ा हुआ है। चीज ऑमलेट एंड टोस्ट। मम्मा आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी? बहुत अच्छी है ना? ये सब आप ही के मारे हुए टेबल क्लॉथ है, मैंने आप ही की अलमारी से निकाले। कैसा है तरबूज? ठीक है। नाइस अभी नाइस। अब ये देख के तो बहुत मस्त लग रहा है, मैं खा के बताता हूँ। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ओह सही में दिस इज रियली टेस्टी। हमने खा लिया है। देखिए सज्जनों, ये मेरी तीसरी बाइट है क्योंकि कुत्ते भौंकते जा रहे हैं। मेरी आवाज से ज्यादा इन कुत्तों की आवाज आ रही है। मुझे इतनी जोर से बोलना पड़ रहा है, इनके मोहल्ले वाले सुन रहे होंगे भाई इनके घर तो ऑमलेट बना है चीज वाला, लेकिन सच में बहुत मस्त बना है। ये है हमारे भ्राताश्री जो खाना खा रहे हैं और अब हम टूटने जा रहे हैं खाने पे क्योंकि सुबह से बना रही हूँ मैं, बहुत गर्मी लग रही है, मैंने फैन ऑफ कर रखा है। यार ये बहुत सही लग रहा है, तुम सुबह से बना रही हो वो तो अलग बात है, रोज खिलाया करो ना, कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ इसी मोमेंट की वजह से मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया था, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी, मैं इतना अच्छा बनाऊंगी, लोग रोज मांगेंगे मुझसे। और टेल देम टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देवियों सज्जनों, मेरी आपसे सादर विनती है कि आप इस कंटेंट को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं और लोगों से शेयर करें और भूखे लोगों से शेयर करें जिनको खाना सब्सक्राइब करने को बोल, और सब्सक्राइब भी करें। हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ओके बाय।